हेलो फ्रेंड्स, आई एम रामेश्वर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, एज वी नो FSSAI मेंस की एग्जाम इज नेक्स्ट शेड्यूल्ड ऑन द नेक्स्ट वीक, सो डेफिनेटली वी विल ट्राइंग टू कवर पार्ट ए फॉर द सेम। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं पार्ट ए फॉर द FSSAI मेंस एग्जाम। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम we directly move on to the part A. In part A, there is typically three things are there included in part A. पहली है that is the comprehensive analysis, nothing but a passage in English. Second one is the MS Word, or we could say the different things with concern to the computer. And third one is the situational analysis. It is typically deal with the how you could solve the different cases when you actually acted in the organization. So typically we cover situational analysis. In the situational analysis, we are trying to cover 4 different methods of the situational analysis. So definitely be with me till the last. So friends, start with the concept. What is situational analysis? It is nothing but a type of method, or we could say it is a collection of methods that managers use to analyze an organizational environment, capabilities, customers and business organization. So in nutshell, we could say it is a way to establish long-term commitment with the customers. Okay, so now we move onwards towards the 4 different methods. Okay friends, in terms of situational analysis हमें यहाँ पे 4 methods analyze करनी है। कौन कौन सी है वो? That is SWOT analysis, then 5C analysis, Porter's 5 value process and VRIO analysis. So directly moving to detail one by one. First one is the SWOT analysis. It is a combination of 2 different things. SW is for the internal analysis of the organization, that is strength and weakness, and with concern to opportunity and threats, they act as a external environment for any organization. So देखिए यहाँ पे strength और weakness ये हमारे internal analysis है, because it is directly related with the organization and it is definitely a present scenario. और यहाँ पे देखिए opportunity and threats, it is typically external point of view because it could be happen in the coming future. So from the company point of view, our main aim is to measure on the increase the different types of strength. At the same time, we have to reduce the different types of weakness. And from the future point of view, हमें क्या करना है? We have to make use of availability so that could be your strength in the future. और जो कुछ T माने threats, जो कुछ हमारे थ्रेड्स है, वी हैव टू रिड्यूस द थ्रेड्स राइट नाउ। हमें अभी से कुछ मेजर्स लेने होंगे सो दैट उन स्टेप्स के वजह से जो हमारे फ्यूचर के थ्रेड्स है वो वहाँ पे कम हो जाए और वो हमारी फ्यूचर की वीकनेस ना बने। सो दैट इज द मेन एम ऑफ द SWOT, SWOT एनालिसिस। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिए, इंटरनल आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस विच इज प्रेजेंटली नोन, and external are indirectly related because they are indirect affecting on the organization point of view, that is opportunity and threats. ये हो गया SWOT analysis। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि what is the typical example for the SWOT analysis। देखिए यस माने strength का मतलब होता है if we take example of the Indian food processing industry, FPI, food processing industry। देखिए इसमें strength क्या है हमारी? skilled resources, that is nothing but the skilled manpower, different types of agroclimatic zones, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ये हो गई हमारी टिपिकली स्ट्रेंथ। अभी देखिए वीकनेस, वी कुड से लो प्रोसेसिंग लेवल, ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी, यहां पे आता है ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एग्री एक्सपोर्ट जोन, ये टिपिकली हो गई हमारी अपॉर्चुनिटी। अब बात करेंगे थ्रेट्स की। सो द थ्रेट्स कुड बी अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ये टिपिकली हो गए हमारे थ्रेड्स। बिकॉज अगर हम मूव करके दूसरे कंट्री में जा रहे हैं सो दैट कुड बी अ इफेक्ट दैट वो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी में आएंगे, सो दैट कुड बी अ थ्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मूव करते हैं सेकंड। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टिपिकली 5C एनालिसिस। यहाँ पे टिपिकली 5C है। देखिए कौन कौन से है? कंपनी, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, कोलैबोरेशंस विद ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्लाइमेट। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये 5C एनालिसिस है क्या। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट सी जो हमारा है दैट इज द कंपनी। फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू हमें सबसे बड़ी क्या चाहिए? दैट इज द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए हैं। अगेन द पोजीशन हमें मिलेंगी बाय मीन्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन। परफॉर्मेंस, व्हाट इज आवर परफॉर्मेंस,
and product line, what are the different products offered by the company. सेकंड सी है दैट इज द कॉम्पिटिटर. यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स, उसके बाद उनको असेस करना है हमें, और फाइनली प्रिडिक्ट फ्यूचर इनिशिएटिव्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव मार्केट. थर्ड हमारा है कस्टमर. इसमें हम सबसे बड़ी बात करनी है दैट इज आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड perceive the customers to buy our product. With consider the income level generated by the customers, also we have to analyze frequency of purchase by the customer. और फाइनली हमें ये भी देखना है what are the distribution channel which occurs from the customer point of view. Fourth one is the collaborations. Collaboration में first है intermediary persons like the different middlemen. Then suppliers, because we know suppliers are many in number, like from the manufacturer, retailer, shippers, these are the numbers where. Then distributors, यहाँ पे distributor act as a connecting link between the transactions. And finally partnership. Partnership में हम ये कह सकते हैं it is nothing but the sharing of business skills and capabilities. और finally fifth one is the climate. इसमें पेस्टल आता है हमारा like पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. चलिए फ्रेंड्स, अब हम रुक करते हैं हमारे तीसरे मेथड की तरफ, दैट इज द पोर्टर्स 5 फोर्सेस. इसमें साइंटिस्ट माइकल पोर्टर ने ये थीसिस, इसने ये मेथड दी है दैट इज द पोर्टर्स 5 फोर्सेस इन द ईयर 1979. 5 प्रकार के फोर्सेस उसने बताए व्हेन यू कुड एंटर इनटू द मार्केट. जब आप मार्केट में एंटर करते हो तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आप पे अफेक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर टिपिकली 5. तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं 5 फोर्सेस फ्रॉम द माइकल पोर्टर. फर्स्ट वन इज द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट. अगर कुछ नया एंट्रेंट आ गया है, नई कंपनी आई, सो व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम. बट इट इज नॉट ईजी बिकॉज बैरियर्स टू एंट्री. अगेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इट क्लियरली मीन्स दैट, इसका मतलब यह होता है इफ यू प्रोड्यूस मोर एंड मोर पर यूनिट आउटपुट कॉस्ट इज रिड्यूस्ड. ब्रांड लॉयल्टी की वजह से नए एंट्रेंट की तरफ लोग नहीं बढ़ेंगे, नहीं रुक करेंगे. अगेन कैपिटल रिक्वायरमेंट इज समवॉट रिक्वायर्ड वन. सर्टन गवर्नमेंट पॉलिसीज कुड बी देयर. सो दीज आर सर्टन फैक्टर्स. सेकंड वन इज द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट. इसका मतलब कंपनी ऑलरेडी देयर एग्जिस्ट करती है बट उन्होंने अभी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट निकाला है. सो दैट्स वाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल एज अ सब्सटीट्यूट. बायर प्रोपेंसिटी टू सब्सटीट्यूट, बायर उसके लिए सब्सटीट्यूट करेंगे क्या. Relative price performance of substitute, what could be the price factors, what is the switching cost, these are the factors required for that. Then bargaining power of buyer, here number of customers. इसमें देखिए the major power is towards the hands of buyer because there are only few buyers for the products. That's why price sensitivity, size of each customer order, again buyer's ability to substitute, switching cost, these are the factors important for that. Bargaining power of supplier, यहाँ पे supplier के हाथों में bargaining power है because they are only few and they rest the power with them. That's why number and size of suppliers, uniqueness of each suppliers and focal company's ability to substitute the product, ये चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है. And finally fifth one is the rivalry among existing firm. इसका क्लियर मीनिंग है इसमें एक ही प्रकार के मार्केट में बहुत से कॉम्पिटिटर्स है, लाइक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. एफएमसीजी मार्केट में बहुत सारे राइवल्स है, बहुत कॉम्पिटिटर्स है. एट दैट टाइम प्राइस इज कॉम्पिटिटिव वन. अगेन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर मोर. डाइवर्सिटी इन देयर कॉम्पिटिशन विथ कंसिडर द प्रोडक्ट. इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेट्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ब्रांड लॉयल्टी, क्वालिटी डिफरेंसेस अमंग द ऑल. दैट्स वाई हियर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कुड बी ऑब्जर्व. अगर हम सिंपल एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, सो फॉर द रिवैलरी द सिंपल एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लाइक आवर टी, सोप्स आर देयर. फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ मेथड ऑफ द सिचुएशनल एनालिसिस एंड दिस इज नथिंग बट द VRIO, VRIO एनालिसिस. यहाँ पे V stands for value, R for rarity, I imitate and O for organization. देखिए ये that is nothing but a method in which it is a sequential way. सबसे पहले बात करेंगे वैल्यू. If the product has the value then definitely good, but if it don't have the value then definitely we have to move ahead to create a value to the product, that is benefit against cost. Second, rarity. वैल्यू भी है बट रेयरिटी नहीं है तो क्या होगा, और वैल्यू है रेयरिटी भी है तो क्या होगा. रेयरिटी मीन्स द रिसोर्स अवेलेबल इज वेरी स्कार्स वन. उसके बाद आता है डिफिकल्ट टू इमिटेट, कोई इसकी कॉपी ना कर सके.
एंड फाइनली ऑर्गेनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर ठीक है थोड़े समय के लिए उसको कॉपी कोई कर भी ना पाए, बट इन फ्यूचर इफ समवन कॉपी द टेक्नोलॉजी, तब हमारा वहां पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रह पाएगा. And with concern to the organizing the organizations, our main aim is to create different types of sustainable competitive advantage with typical strategy. तो फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ व्रियो फर्स्ट इज द वैल्यू. वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू. यहाँ पे देखिए वैल्यू मतलब इफ वी प्रोवाइड सर्टन बेनिफिट्स अगेंस्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोडक्ट देन डेफिनेटली वी क्रिएट वैल्यू. बट अगर हम वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं सो दैट कुड बी आवर कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज. अगर हम वैल्यू क्रिएट करते हैं बट द प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉट रेयर, वो हमें कहीं पे भी मिल जाएगा, सो दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बट इट इज़ इक्वल एडवांटेज टू ऑल. इफ वी क्रिएट वैल्यू वी क्रिएट रेयरिटी बट द प्रोडक्ट इज इमिटेबल इन नेचर. इमिटेबल मतलब उसका कॉपी कोई भी उसका कॉपी कर सकता है प्रोडक्ट का, देन द एडवांटेज कुड बी इन अ टेम्पररी मैनर. इफ वैल्यू इज क्रिएटेड प्रोडक्ट इज रेयर, प्रोडक्ट इज इनइमिटेबल, उसका कॉपी भी नहीं हो सकता, बट इट इज़ नॉट इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, सो दैट हम कह सकते हैं इट इज़ अ वे ऑफ अनयूज्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एडवांटेज तो हमारे पास है बट हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. एंड इन द फोर्थ वन वी हैव द वैल्यू, रेयरिटी, प्रोडक्ट इज इनइमिटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड वन, then we definitely move ahead towards the sustainable competitive advantage strategy and that could be retained for further more longer time. तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये सब डिस्क्रिप्शन, सब थ्योरेटिकल पार्ट्स की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ मैं. इफ़ यू स्टिल थिंक certain things could be required then you could text me. Also keep in mind one more typical thing that in part A you don't have any options. No alternatives are there, so definitely use the link to act as a theoretical notes with you. Friends, I think the whole session is definitely useful to you because I tried to cover all the 4 methods of situational analysis in the span of just 10 minutes because I know आपके पास समय ज़्यादा नहीं है because the exam is just way ahead in our coming week. That's why I'm trying to cover such important topics which you could. Definitely, if you think any problem, then definitely you could text me on the comment section. And if it's your first time, then don't forget to click on like and subscribe button. Thank you and stay tuned for our next session.